वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में से एक प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया was propounded by Justice M. Jagannath Rao of the Supreme Court in the case Andhra Pradesh Pollution Council versus Professor M.V. Naidu। सो ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व करता है फोर्सिंग एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि जो एनवायरमेंटल डैमेजेस अभी तक हुए नहीं हैं उनके लिए मेजर्स लेना टू अवॉइड दिस डैमेज और चूज एक्टिविटीज़ विद मिनिमल एनवायरमेंटल डैमेज। The precautionary principle is based on scientific uncertainty. So, it should not only aim at protecting health, property, and economic interest, but environmental protection should also aim at protecting the environment. Precautionary duties should focus not only on actual dangers but also on पोटेंशियल डेंजर्स, यानी जो जिनकी संभावना है होने की। सो अंडर द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल द बर्डन ऑफ प्रूविंग द हार्मलेस इफेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड एक्टिविटीज इज ऑन द पर्सन हु वांट्स टू चेंज द स्टेटस को। सो इस प्रिंसिपल के अंडर जो हार्मलेस इफेक्ट है प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ का, ये प्रूव करने का बर्डन उसी इंसान पे जो प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। सो दिस इज ऑफन कॉल्ड द बर्डन ऑफ अल्टर्ड एविडेंस बिकॉज नॉर्मली द पर्सन हु इज अपोजिंग अ चेंज इन स्टेटस को यानी करंट सिचुएशन हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इफ द स्टेटस को हैज़ बीन चेंज्ड बाय कंस्ट्रक्शन द चेंज इज अ threat to the environment and construction will increase environmental pollution. But under the precautionary principle, now the person who wants to change the status quo will be burdened to prove that construction etc. The precautionary principle suggests that where there is an obvious or serious irreversible risk from a change in the status quo, it would be appropriate to place the burden of proof on the person proposing an activity to prove that the activity poses a potential for environmental hazard and is potentially harmful and shall be carried out by adopting controlled measures that will neutralize or minimize the impacted hazards of environmental damage. Thanks for watching and like, share and subscribe to the channel.